धुरंधर सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी फ्लेमिंगो एंड विस्तास के चैप्टर्स इन 15 मिनट्स। एक सेशन में हम कवर करेंगे एक लेसन, नॉट जस्ट द समरी बट आल्सो माइंड मैप, एंड मैं आपको दूंगी अल्ट्रा प्रो टिप्स। तो जहां पे भी आपको दिख जाए ये स्टार, वहां पे आप समझ जाइए वो है आपकी अल्ट्रा प्रो टिप। तो ये स्टार जहां पे भी आपको दिखता है वो है अल्ट्रा प्रो टिप, जो कि आपको करेगी एग्जाम रेडी। So without any further delay, just like that lightning bolt of thunder, let us begin with Lost Spring. The second part of the chapter is the story of Mukesh. Now the second story begins. Mukesh. The chapter moves to Firozabad, a town famous for bangles. Acha, you all must have seen your mothers or some of your female relatives wearing those glass bangles, कांच की चूड़ियां, right? They symbolize सुहाग. हर एक married lady is supposed to wear it. So all the married ladies across India are supposed to wear those glass bangles as a marker of their marriage. So this particular town, Firozabad, is famous for making glass bangles. In fact, जितने भी glass bangles majorly India में बनते हैं, they are manufactured or they are produced in Firozabad. And let me tell you, glass bangle making as a process is very hazardous. It is a quite hazardous process because it involves molding the glass into a circular shape. तो पहले आप उसको mold करते हैं circular shape में, then you file it, जिसको scrubbing वगैरह करते हैं, so that the polishing or the surface is smooth. Then you need to polish it with colors. उस पे आप color करते हैं, वो भी आपको dim light में करना पड़ता है ताकि आपको exact color उस पे आ सके. So of course this whole process is very difficult and hazardous to health, right? So this town Firozabad is known for making bangles. Children work in Bangle factories. Another example of child labor. That here also children are working in glass bangle making factories. Mukesh is a poor boy but he has a dream. Now this is important. Again, ultra pro tip 1. Why Mukesh is different? Because Mukesh dreams. All the other people in his town, that is Firozabad, they have even stopped dreaming. वो अब सपना भी नहीं देखते क्योंकि उनको पता है कि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करना है. दे हैव टू डू दिस जनरेशन बाय जनरेशन. और वो क्या करना है उनको? ग्लास बैंगल मेकिंग. दे हैव एक्सेप्टेड इट एज अ फेट कि डेस्टिनी है उनकी, उनको वो करना ही है. बट मुकेश इज डिफरेंट इन दैट सेंस बिकॉज ही हैज अ ड्रीम. सो ही ड्रीम्स. And what is his dream? Let us understand. Let us try to move forward. So what is his dream? Mukesh's dream is to become a motor mechanic. So he does not want to remain a glass bangle maker just like the other male members of his family. He wants to become a motor mechanic. His dream is different because no one in his family has dreamt beyond bangles. As I said, he is dreaming of becoming a motor mechanic. This fact becomes really important because he wants to break away from the family tradition. क्योंकि उसकी फैमिली में एक ट्रेडिशन हो गया सॉर्ट ऑफ. व्हाट इज द ट्रेडिशन? कि भाई मतलब सब बैंगल मेकिंग ही कर रहे हैं, राइट? भाई, पापा, मम्मी, भाभी, बहन सब क्या कर रहे हैं? बैंगल मेकिंग कर रहे हैं. तो दिस हैज बिकम अ ट्रेडिशन इन हिज फैमिली. जैसे वो होता है ना कि द बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन के घर में बच्चे भी आगे बिजनेसमैन हो जाते हैं, फिर और आगे बिजनेसमैन हो जाते हैं. सो दैट काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन इज गोइंग ऑन इन देयर फैमिली, विद ओनली द डिफरेंस कि बिजनेसमैन तो आर सपोज टू बी रिच, बट यहाँ पे क्या है, ये पुअर है. ऐसा नहीं है कि इनको ग्लास बैंगल मेकिंग करके बहुत ही लग्जरियस काइंड ऑफ लाइफ मिल रही है. नो, they are also extremely poor. So let us move forward. Then we have the introduction to the condition of bangle makers. पहले जैसे मैं सीमापुरी का इंट्रोडक्शन दिखाया था, राइट? कि सीमापुरी में द थिंग्स आर वेरी ब्लीक, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज देयर. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज देयर कि यहाँ पे भी कंडीशन जब हम बैंगल मेकर से देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खराब है, राइट? वाई? Because bangle makers work in dark rooms, hot furnaces and suffocating air.
So as I said कि bangle making is a very hazardous kind of process. Why? Because you are working in dark rooms. अगर आप well lit rooms में काम करोगे तो you will not be able to bring out the best color in bangles. So that is why they work in very dark rooms. Hot furnaces एकदम भट्टी के अंदर काम करते हैं because you need extraordinary temperatures to melt glass. उसको mold करना है ना, पूरी shape में circular में लाना है, तो hot furnaces में आपको काम करना पड़ता है. And suffocating air. ऑफ कोर्स व्हेन यू कलर द बैंगल्स तो उसके लिए कलर तो आप रखेंगे एंड वो कलर्स में अलग अलग टाइप के दे एमिट वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ गैसेस, तो सफोकेटिंग एयर. So they work under these conditions not very well. Then children lose eyesight. As a result, the children who are exposed to all these things, they lose eyesight, their health deteriorates and they also lose their childhood, क्योंकि चाइल्ड लेबर कर रहे हैं वो लोग, शुरू बचपन से ही काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड एज दे आर ट्राइंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड. तो उन्होंने वो फेज तो देखा ही नहीं ना, व्हेन यू आर प्रोवाइडेड फॉर, जब आपको कोई चिंता नहीं होती, दैट केयर फ्री डेज, वो उन्होंने देखे ही नहीं है, राइट. They are trapped because poverty, debt, and exploitation is there. Again, ultra pro tip number two. Okay, what are the reasons that families in Firozabad are continuously involved in bangle making generation by generation? Why? Because of these three things. Poverty. They are so poor that they cannot get themselves educated or their children educated एंड डू सम अदर थिंग. तो वो इतने पुअर हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं. डेट, कि क्योंकि बैंगल मेकिंग इज अ बिजनेस, राइट, बट वो बिजनेस इतना नॉन प्रॉफिट मेकिंग है कि वो लोग हमेशा एक डेट में रहते हैं, एक उधार में रहते हैं, राइट. एंड एक्सप्लॉयटेशन, अभी हम देखेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन कैसे होती है, बिकॉज द गवर्नमेंट एजेंट्स, द मिडल मैन या फिर द ब्यूरोक्रेट्स आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटिंग देम. तो वो वाली अभी वी विल सी द एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट part. Now let us understand the last point, that is the trap of society. Now this is the ultimate and I would say the most important point in the chapter. क्यों? क्योंकि in this part of the chapter Annie Jung is going to explain or analyze that why child labor exists in India in the first place. क्योंकि इंडिया में constitutionally child labor banned है, laws are also in place and yet these laws are flouted day in day out. कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चाइल्ड लेबर इलीगल होने के बाद भी प्रैक्टिस की जा रही है, राइट. सो द ट्रैप ऑफ सोसाइटी. द ऑथर एक्सप्लेन्स द फुल सिस्टम, मिडलमैन, पॉलिटिशियंस, पुलिस एंड साहूकार्स, दे कीप बैंगल मेकर्स पुअर. नाउ अंडरस्टैंड कि क्या यहाँ पे एनालाइज करती है. शी एनालाइजेस कि these four categories of people, they keep the bangle makers in Firozabad poor. कैसे? These middlemen are actually the people who take the goods from the producer to the ultimate consumer. For example, अगर कोई इंसान, अगर कोई बैंगल मेकर प्रोड्यूस कर रहा है बैंगल्स इन फिरोजाबाद, he will not be able to sell them to Delhi. क्यों? क्योंकि उसके पास उतना तो फेयर ही नहीं होगा, राइट. एंड द अदर थिंग इज कि उसके इतने कनेक्शंस नहीं होंगे एंड रोड पे बैठ के तो वो सेल करेगा नहीं, ऑफ कोर्स. तो हु आर दीज मिडलमैन? तो मिडलमैन वो क्लास होती है जो कि आपके प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाती है चीज, राइट. प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक. लेट मी राइट ओवर देयर. हाँ, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. अब होता क्या है कि द मोनोपोली ऑफ प्राइस, ऑफ सेटिंग द प्राइस इज विद मिडलमैन. क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर को देंगे कम पैसे एंड कंज्यूमर से चार्ज करते हैं हाई. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ फार्मिंग आल्सो, राइट. तो क्या करेंगे? प्रोड्यूसर को बहुत कम पैसा देंगे एंड कंज्यूमर से बहुत हाई पैसा देंगे, तो उनका बीच में जो मनी हो जाता है वो बहुत हाई हो जाता है, उनकी कमीशन बहुत हाई हो जाती है. दे आल्सो वांट टू इंक्रीज देयर इनकम. तो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दीज मिडलमैन, the producers or the manufacturers of bangles, they remain poor, right. Then the second thing, the second group of people that make them or that keep them poor are the politicians, because there are MLAs
who represent different areas. So of course, the bangle makers, they can have policies implemented, policies through the government representatives implemented in such a manner कि मिडल मैन का प्रॉफिट कम हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि पॉलिटिशियंस ऑल्सो have a stake in the profits of these middlemen, तो वो भी मिले होते हैं. Then police, the police also does not recognize the cooperatives, or they also do not file complaints if there are any made against the middlemen. तो middlemen तो exploitation कर ही रहे हैं, but if there are any complaints that are made against these middlemen, तो पुलिस किसका साथ देती है? Of course the middlemen. Then the sahukars. Sahukars are the money lenders, right? So money lenders भी of course when they are not able to make profit, तो वो क्या करेंगे? जो बैंगल मेकर्स है वो मनी लेंगे, राइट? एंड दे डू नॉट हैव रीच टू द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन. तो वो किससे मनी लेंगे? जो हमारे नॉर्मल साहूकार होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं हर एक एरिया में. और वो लोग क्या करते हैं? दे चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट. तो इससे क्या होता है कि अगेन द लॉस ऑफ द बैंगल मेकर्स. तो अल्टीमेटली ये जो चार कैटेगरीज ऑफ पीपल है, they are trying to keep this circle, this vicious circle in operation. And what is this vicious circle? जिसकी वजह से ये जो बैंगल मेकर्स हैं ये पुअर के पुअर ही रह जा रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू ग्रो, क्योंकि ना उनको प्रॉफिट मिल रहा है, ना ही पुलिस उनके लिए कुछ कर रही है, ना ही पॉलिटिशियंस जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कुछ कर रहे हैं, ना ही ब्यूरोक्रेट्स उनके सुनते हैं, और ना ही these middlemen are helping them. They are forced to accept it as fate. So ultimately, all the people in Firozabad has accepted bangle making as their ultimate fate. कि उनकी डेस्टिनी है कि उनको उसी में काम करना है, उसी इंडस्ट्री में काम करना है. Women remain suppressed, patriarchy plus poverty. Now this theme I have marked as ultra pro tip, but this theme is not that recurrent. इतनी ज्यादा बार पूछा नहीं गया, बट ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में एक दो बार ये चीज आई है कि दे आर आस्किंग अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन लॉस्ट स्प्रिंग. तो लॉस्ट स्प्रिंग में हमने देखा था कि मुकेश के घर में जब जाते हैं तो उसकी भाभी हमें दिखती है, एंड द भाभी इज क्वाइट यंग, राइट? द सिस्टर इन लॉ इज क्वाइट यंग. शी इज कुकिंग मील फॉर ऑल द एल्डरली पीपल इन द फैमिली. और उसकी हालत अगेन शी इज डबल सप्रेस्ड इन द सेंस कि वो पेट्रियार्कल, उसको पेट्रियार्कल सोसाइटी में वो रह रही है तो उसको वो सारे कस्टम्स भी फॉलो करने हैं, तो उसको वो घूंघट भी लेना है, खाना भी बनाना है, घर का काम भी करना है, एंड फ्री टाइम में बैंगल्स भी बनानी है, राइट? And of course poverty is there. Poverty तो is something that they all are suppressed with, but women are especially doubly suppressed. क्यों? क्योंकि वो patriarchal society के pressure से भी suppressed feel करते हैं. Let us move forward. Then we have why lost spring. That why the chapter is titled as lost spring. I have marked this as ultra pro tip 4. क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार, numerous times, इतनी बार पूछा गया अलग अलग तरीके से कि I cannot even tell you. Why lost spring? Why the title of the chapter is lost spring? As I said, that spring implies youth or refers to the period of childhood, है ना? तो वो जो हमारा चाइल्डहुड वाला पीरियड है, इट इज सिंबलाइज्ड विद जॉय एंड होप, बट जॉय एंड होप इज लैकिंग. क्यों? क्योंकि बच्चे क्या है वहां पे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, तो उनका जो पूरा यूथ है वो किस में जा रहा है? चाइल्ड लेबर में. These children never enjoy real childhood because they are involved in child labor. Their dreams are crushed by hunger, labor, and exploitation. So their spring is lost before it blooms. So their youth or their childhood gets destroyed even before they start living their lives. So of course, therefore the chapter is named as Lost Spring, that their childhood is completely lost, as if उनसे वो छीन लिया गया. Okay, let us move forward. Yes, so this is the mind map of the chapter. Plot: Mukesh is introduced,
right? And we are introduced with the dream that he has. And what is the dream? That he wants to become a motor mechanic. Then we are introduced to the sufferings of the bangle makers. Okay, just like the condition of people in Simapuri is bad, similarly, bangle makers also face quite a pathetic condition in bangle making industry. Then the social trap or exploitation is explained, that who are the classes of people who are contriving against these bangle makers to keep them poor. तो हमें पता लग गया था कि वो चार कौन थे, the politicians, the middlemen, the sahukars, and also the money lenders. अच्छा, money lenders और the sahukars. तो वो हमें पता लग गया था कि वो चार कौन थे, the middlemen, the politicians, the bureaucrats, the police, and also the sahukars. The title, the meaning of the title Lost Spring, so that we have understood. Then who are the key characters? Of course, Mukesh, bangle maker, who dreams. So he becomes different from his community because he has the ability, or he has the guts to dream. Annie Jung, narrator or the observer. Then we have the setting. We know that the setting is Firozabad. Firozabad is a small town in UP where majority of the bangle making industries are placed. Poverty, tradition, employment, and survival. So, of course, the theme of poverty is there. Then tradition. What is the tradition? That the family is involved in bangle making. That is the tradition. But employment here, although people are employed, but employment here is mere survival, right? And that too survival in order to pay the debt of the saukars. Then we have the symbolism. So bangles imply, वो जो circular bangles है, they actually imply a tradition, a trap. तो ऐसा एक circle है जिसको कि they are, the bangle makers are not able to break away, right? It is like a vicious circle. Then the garage dream is equals to freedom. Now garage dream, basically Mukesh has a dream of becoming a motor mechanic. So he has this dream कि वो एक garage में work करेगा as an apprentice, as a helper, right? So this garage dream becomes a hope for freedom for him. What are the themes? Lost childhood. So of course, Lost Spring is all about lost childhood. In Sahib's case also, we have seen that it is about lost childhood. Then we have poverty, due to which the children are forced to do child labor. Exploitation of the poor, we have seen, यही वाला vicious circle वाला trap. Then dreams versus reality. So we have seen that Mukesh wants to become a car mechanic. He has dreams. But what is his reality? That he has not seen an airplane. So of course he cannot even think about. So his reality is also, his dreams are also obstructed, or you can say limited by the reality, right? So that is there. This brings us to the end of the session where we tried to learn the summary of Lost Spring along with the mind map, and I gave you a few ultra pro tips to make you exam ready. If you liked the video, give it a thumbs up, share it with your friends, subscribe to my channel Fit the Late, and do not miss any session in Dhurandhar series.